Hello and welcome you all to Azito Academy. Students, today we are going to discuss an important topic, symbols for some elements. Students, we will go further. First of all, we already have discussed in the previous video, that is Dalton's pictorial symbols of some elements proposed by Dalton. And today we will discuss shorthand representation of the name of an element. So the symbols used by Berzelius are based on alphabet, but currently IUPAC, it's a full form of International Union of Pure and Applied Chemistry, approves the names of elements. Most of the symbols consist of the first one or two letters of the element's name in English, Latin. The first letter of a symbol is always written in capital letter and the second as a small letter. So students, suppose example, hydrogen. Symbol is only H, capital H. It's not small h. Okay. Suppose aluminium. A, first letter is capital and the second letter is L. It's not AL. Cobalt or cobalt, magnesium. Magnesium. Mg. It's not Mg. Like cobalt, CO, not CO. There are a number of elements whose names begin with the same letter. Examples, aluminium, argon, arsenic. These all are starting from the same letter A. Barium, beryllium, bismuth, boron, bromine, all being with letter B. The symbol of such elements are represented by the first letter followed by some prominent letter from their English names. So now the start symbols for same elements. Aluminium, Al, argon, first letter A, second letter small r. Arsenic, but this one is As. Which one is the prominent? Arsenic, As. Barium, Ba. Beryllium, Be. Bismuth, Bi. Boron, only B. Bromine, Br. Calcium, Ca. Carbon, only C. Chlorine, Cl. Chromium, these all are starting from C. So the C, all are the first letter is same C, but the second letter is not the same. Chromium, Cr, small letter is R. Cobalt, Co. Fluorine, capital F. Hydrogen, H. Iodine, I. Lithium, Li. Magnesium, Mg. Capital M, G small. Manganese, Mn. Molybdenum, Mo. Neon, Ne. The same nickel,
Na, oxygen O, palladium Pd, platinum P only. Sorry, Pt. Phosphorus only P, silicon Si, strontium Sr, sulfur only S, uranium only U, vanadium only capital V, and the last one is zinc, it's Zn. Clear, student? Some elements have been named after their Latin or German names. Students, is some name of the elements, suppose sodium, but its symbol is Na. Sodium, its Latin name natrium, so that's why its symbol is Na. So the few elements are known by their Latin name: sodium, natrium, silver, argentum, so Ag, gold, aram, Au, iron, ferrum, Fe. आयरन का फेरम होता है स्टूडेंट Fe. मर्क्यूरी, हाइड्रोगायरम Hg. पोटासियम, कैलियम K only. So potassium, its symbol is K. Lead, plumbum Pb. Antimony, stibbium Sb. Tungsten, wolfram W. Clear? So the few elements are known by their Latin name. Now the next topic is average atomic mass. एवरेज एटॉमिक मास जानने से पहले आइसोटोप्स जानना पड़ेगा. व्हाट इज द आइसोटोप्स? Isotopes are defined as atoms of the same element having the same atomic number but different atomic masses. Suppose students, hydrogen, atomic number 111 but atomic mass is 1, 2, 3. Protium, deuterium, tritium, तीनों का एटॉमिक नंबर स्टूडेंट सेम है, एलिमेंट भी सेम है, बट उसका मासेस क्या है? डिफरेंट, 1, 2, 3. सो दिस इज कॉल्ड द आइसोटोप्स. आइसोटोप्स क्या है? एटम्स हैविंग सेम elements having the same atomic number but the different mass number. This is called the isotopes. The actual atomic masses of the elements are the average atomic masses. कोई भी एटम का जो एक्चुअल एटॉमिक मास होता है किसी भी एलिमेंट्स का, उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? एवरेज एटॉमिक मासेस कहते हैं स्टूडेंट्स. द एवरेज हैज बीन फाउंड बाय टेकिंग इनटू अकाउंट द मासेस ऑफ द डिफरेंट आइसोटोप्स एंड द रेशियो इन विच दे एग्जिस्ट. The concept of average atomic mass will be discussed in coming video, students. The atomic masses of most of the elements have been rounded off the nearest whole number. For example, atomic mass of hydrogen is taken as 1 U. Now look at here, atomic mass हम लोग unified mass से इसको denote करते हैं. तो हाइड्रोजन का atomic mass होता है 1. तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि इसका एटॉमिक मास है 1 U, एवरेज एटॉमिक मास, बट द एक्चुअल एटॉमिक मास होता है हाइड्रोजन का 1.008 U. अब स्टूडेंट्स इसे हम लोग क्या करते हैं? राउंड फिगर में जो पॉइंट के बाद 50 से जो नीचे होता है उसे हम लोग क्या मान लेते हैं? सपोज 1.008 है तो इसे हम लोग सिर्फ 1 ले लेंगे. अगर कोई भी एलिमेंट्स का सपोज 2.598 है तो उसे हम लोग क्या ले लेंगे? राउंड फिगर में 3 ले लेंगे. तो हम लोग इस तरह से एवरेज एटॉमिक मास मतलब राउंड ऑफ कर लेते हैं. द एटॉमिक मास ऑफ सम कॉमन एलिमेंट्स लाइक दैट गिवन बिलो. एटॉमिक मासेस ऑफ फ्यू एलिमेंट्स. Elements symbol atomic mass: hydrogen 1, helium 4U, lithium 7U, beryllium 9U,
boron 11U, carbon 12U, nitrogen 14U, oxygen 16U, fluorine 19U, neon 20U। स्टूडेंट्स आप सब इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, अच्छे से इसको देखिएगा, बार बार इसको रिपीटेडली देखिएगा, पढ़िएगा, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, सोडियम 23U, मैग्नीशियम 24U, एल्यूमिनियम 27U, सिलिकॉन 29U, फास्फोरस 31U, सल्फर 32U, क्लोरीन 35.5U, आर्गन 40U, potassium 39U, and the last one calcium is 40U. So these all are the atomic masses of the elements. Now the next is gram atomic mass. What is the gram atomic mass? The atomic mass of an element expressed in grams, which is numerically equal to the mass in U. U is unified mass. For example, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14U। नाउ ग्राम एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, जब इसको हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 14G। एटॉमिक मास ऑफ सल्फर इज इट्स अ 32U, एंड ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सल्फर मीन्स जब इसे कन्वर्ट करेंगे ग्राम एटॉमिक मास में तो ये हो जाएगा 32G। Thank you very much for watching this video. Please like, share and subscribe the channel to get the next update and video.